Hello everyone, very good morning to all of you. So today in this video we will be discussing about Indian honor systems. So Indian honor system series I will be covering in two different parts. So this one is the part 1 and very soon I will be covering part 2 also. So with the help of different slides we will be discussing about the various categories of Indian honor system, and I request to all of you to listen this video till the end. So introductions. The Indian honor system primarily stands for the award issued by the Indian government, and the Indian honor system is broadly classified into 5 different categories. These categories are civilian, patriotic, literary, leadership and particulars. Now let me explain you. Everyone knows the civilian award comprises 2 different categories, that is the Bharat Ratna and Padma award. Later we will be discussing in detail. And the patriotic, again it has 2 parts, the wartime and peacetime. It is also known as gallantry awards. Now literary award, there are some certain literary awards like Sahitya Academy Award, Vyas Saman, something like that. We will be discussing in details. And leadership award means Indira Gandhi Peace Prize, of Mahatma Gandhi Peace Prize, or Pandit Jawaharlal Nehru Peace Prize. These are some certain examples of leadership. And if you talk about the particulars, so whatever prize are there in particular field, like in sports Arjuna Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna, Filmfare Award in film, etc. These are known as the particular awards which are given in particular fields. So these are all about the categories. Now coming to the categories of civilian awards. So as I told you, there are 2 different categories, that is the Bharat Ratna and Padma awards. So everyone knows that the Bharat Ratna is the highest civilian honor of our country, but I think we should start with the basic, which is the right approach to understand anything. So now the next one is the Padma awards, and many a time it is also known as the Padma award. So again there are 3 different categories in Padma awards: the Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Once again, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Now coming to the Bharat Ratna. So Bharat Ratna is the highest civilian award of the country, which was instituted in year 1954. Any person without distinction of race, occupation, position or sex is eligible for these awards, and it is awarded in recognition of exceptional service performance of the highest order in any field of human endeavor, and the recommendations for the Bharat Ratna is made by Prime Minister himself to the President, and the number of annual award is restricted to maximum of 3 in particular years. On conferment of award, the recipients receive a certificate signed by the President and a medallion, that is the medal, and the award does not carry any monetary grants. अच्छा, ये these are all about the facts and figure of the Bharat Ratna. So जैसा कि इसमें हमने देखा कि 1954 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. अभी हम आगे देखेंगे कि इनको सबसे पहली बार दिया गया था, और इसमें मैक्सिमम 3 व्यक्ति से ज़्यादा इसको नहीं दिया जा सकता है एक साल, और हर साल दिया जाता है. वैसे कोई ज़रूरी नहीं है हर साल दिया ही जाएगा. और जैसे कि अभी 2019 के बाद अभी 2021 चल रहा है, अभी तक किसी को नहीं दिया गया है. सो द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, दैट इज द सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी.वी. रमन, and these 3 different personalities were awarded in 1954. If you talk about the recently awardees, so these are Pranab Mukherjee, Nanaji Deshmukh and Bhupendra Hazarika, which were awarded in 2019. अभी 2019 के बाद अभी ये अवार्ड नहीं दिया गया है किसी को. तो जो भारत रत्न अवार्ड है, ये हमारे कंट्री का जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है, कोई भी दूसरा अवार्ड इसके नीचे ही है. Now coming to the Padma award. So Padma awards were instituted in the year 1954, and these awards are announced every year on Republic Day. The award is given in 3 different categories, namely Padma Shri, which is the 4th highest civilian award in Republic of India, is awarded for distinguished service. Padma Bhushan, 3rd highest civilian award in Republic of India, which is given for the distinguished service of high order. And Padma Vibhushan, that is the 2nd highest civilian award of Republic of India, which is given for exceptional and distinguished services. These are all 3 different categories of the Padma awards. और यहाँ पे हमने
असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे पहले पद्मश्री को, देन पद्म विभूषण को, पद्म भूषण को, देन पद्म विभूषण को, यानी कि भारत रत्न के बाद जो नेक्स्ट जो हाईएस्ट अवार्ड है वो पद्म विभूषण है, देन पद्म भूषण है, देन पद्मश्री है। नाउ कमिंग टू दी पेट्रियोटिक अवार्ड्स, so there are 5 different categories in patriotic awards, and many a time it is also known as the gallantry awards. So wartime gallantry award, peacetime gallantry award, wartime / peacetime service and gallantry awards, wartime distinguished services medal, and peacetime distinguished services medal. So friends, I will be emphasizing in details, and I request you to watch this video till the end so that you can understand easily. Or I hope, I assure you that after watching this video there will be no doubts regarding the Indian honor system. Now these are 3 different categories, that is the war time gallantry awards. तो सबसे पहले परमवीर चक्र, अगर हम इसके रिबन के कलर का बात करें तो दिस इज इन पर्पल कलर, और महावीर चक्र दैट इज द सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, तो इसका कलर का बात करें तो व्हाइट और ऑरेंज कलर में है। और वीर चक्र दैट इज ऑल्सो नोन एज दी VRC इन शॉर्ट फॉर्म, एंड महावीर चक्र इट इज नोन एज MVC, एंड परमवीर चक्र नोन PVC इन दी शॉर्ट फॉर्म। और वीर चक्र का अगर हम कलर देखें तो ब्लू कलर और ऑरेंज कलर में होते हैं। दीज आर 3 डिफरेंट गैलेंट्री अवार्ड्स। Now coming to the details of Paramveer Chakra, that is the highest military award equivalent to the Victoria Cross, which was replaced once India gained its independence, and the Paramveer Chakra is India's highest military decorations award for highest degree of valor and self-sacrifice in the presence of enemy, and the medal has been awarded 21 times, 14 of which were posthumously awarded. And literally the meaning of this Paramveer Chakra, that is the wheel or cross of the ultimate brave, and it is similar to the Medal of Honor in the United States and Victoria Cross in United Kingdom. The PBC was established on 26 January 1950 with effect from 15th of August 1947. That was the independent day of our country, and it can be awarded to the officers or any personals from all branches of Indian military. यहाँ पे military in the sense it is not restricted to only army, but it is given to the all ranks of defense forces, which comprises 3 different branches, that is the Air Force, Navy and Army. Once again, all the gallantry awards, that is the wartime gallantry award, that is the Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra, these are given to the all ranks of defense forces. Now coming to the Mahavir Chakra. So this is the second highest military decorations in India, and may be awarded posthumously, and replace the British Distinguished Service Order, the right to use MVC as a post nominal abbreviation. So that is the Mahavir Chakra is the second one. Achha, one more thing I would like to add here. The first awardee of Paramveer Chakra was Major Somnath Sharma, and the first PBOR of awardee of Paramveer Chakra was Lance Naik Karam Singh. Now in the next slide we will be discussing about the Veer Chakra, which is known as the VRC. So it is the third precedence in wartime gallantry awards, and award presented for an act of bravery in the battlefield, replaced the British DSC, MC and DFC, that is the Distinguished Service Cross, Military Cross और Distinguished Field Cross। यानी कि ये 3 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के जो अवार्ड्स थे ये वीर चक्रा के इक्विवेलेंट थे आज़ादी से पहले। एंड द राइट टू यूज VRC एज ए पोस्ट नॉमिनल एब्रिविएशन, ऑलरेडी आई हैव कवर्ड that it is also known as the VRC in short form. So these are the 3 different categories. अभी हम आगे के स्लाइड में हम सारे एक साथ एक बार और देखने का प्रयास करेंगे। Now coming to the peace time gallantry award. So other 3 gallantry awards, that is the Ashok Chakra class 1, Ashok Chakra class 2 and Ashok Chakra class 3 were instituted by the government of India on 4th January 1952, which were deemed to have effect from 15th August 1947, and these awards were named as Ashok Chakra, Kirti Chakra and Shaur Chakra respectively in January 1967. यानी कि 4 जनवरी 1952 में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, और इसको स्टार्टिंग में अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3 के नाम से जाना जाता था, जिससे कि जनवरी 1967 से इसका नाम को बदल दिया गया और इसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों ही वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, उनके ये तीनों इक्विवेलेंट है। अभी आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, सब्सिक्वेंट स्लाइड में हम देखेंगे सबको एक साथ, तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। नाउ दीज आर दी कैटेगरीज ऑफ दी पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स और द रिबन्स और मेडल्स ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड्स। सो ऑल दी 3 कैटेगरीज
मेडल्स आर इन ग्रीन कलर्स, और अगर हम इसको डिस्क्रिमिनेट करें तो अशोक चक्र जो है ये 2 पार्ट में है, और कीर्ति चक्र जो है ये 3 स्मॉल पार्ट्स में इसका रिबन है, और जो शौर्य चक्र है 4 छोटे छोटे पार्टों में इसका रिबन और मेडल्स का जो रिबन है। और इसको याद करना, दिस इज वेरी सिंपल, इट इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, पहले ए आएगा, फिर के आएगा, देन एस आएगा। वंस अगेन अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। नाउ कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ अशोक चक्र, so it is the peace time equivalent of the Paramvir Chakra, awarded to any person for an act of bravery, valor or self-sacrifice other than in face of enemy. This is the difference between the both. May be awarded posthumously. Nayak Nar Bahadur Thapa was awarded India the first Ashok Chakra posthumously in 1952. One more thing, it replaced the British George Cross, यानी कि अशोक चक्र को आज़ादी से पहले इसका इक्विवेलेंट जो था जॉर्ज क्रॉस था, जिसको अशोक चक्र ने रिप्लेस किया है। नाउ कमिंग टू द कीर्ति चक्र, विच इज द सेकंड वन, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। सो पीस टाइम equivalent of the Mahavir Chakra and second in the order of precedence of Peace Time Gallantry Award, and awarded to civilians as well as military persons. One more thing I'd like to add here, that the Peace Time Gallantry Award is given to the civilians as well as paramilitary and defense forces also, whereas the War Time Gallantry Award is only restricted to the defense forces. Now coming to the Short Chakra, in next slides we will be discussing about the Short Chakra. So the peace time equivalent of the Veer Chakra, and it is third in the order of precedence of Peace Time Gallantry Awards, and award was known as Ashok Chakra Class 3, as I covered earlier already, that the Ashok Chakra, Kirti Chakra, Shaur Chakra, it was earlier known as the Ashok Chakra 1, Ashok Chakra 2 and Ashok Chakra 3. So the Shaur Chakra was known as the Ashok Chakra Class 3, and after 1967 it is known as Shaur Chakra, which is the third highest civilian award of our country. So these are all about the gallantry awards of our country. In the next slide we will be discussing the wartime and peacetime service and gallantry awards. So there are 3 different categories, that is the Sena Medal, Nau Sena Medal and Vayu Sena Medal. And remember one thing, Sena Medal is only given to the Indian Army, all ranks of Indian Army for their highest bravery, and Nau Sena Medal is only given to the naval personnel, and Vayu Sena Medal is given to Air Force personnel, all ranks of Air Force personnel it can be given. So whatever gallantry awards, 3 categories of gallantry award, that is the Paramvir Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra are there, it is given to the all 3 branches of the defense forces. Now coming to the wartime distinguished services, there are three different categories, that is the Sarvottam Yuddha Seva Medal, Uttam Yuddha Seva Medal, Yuddha Seva Medal, and many a time it is known as SYSM, UYSM and YSM. This is the Wartime Distinguished Services Medal. It is awarded for the highest, higher and high degree of distinguished services in an operational context, that is the operation context included the time of war, conflict और हॉस्टिलिटी। ये तीनों ही केसेस में ये जनरली हायर रैंक्स के जो डिफेंस के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं को ये दिया गया है, लेकिन देयर आर प्रोविजन टू गिव एनी रैंक इवन इंक्लूडिंग PVR आल्सो, देयर इज नो डाउट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टिंग्विश्ड मेडल ऑफ war time, that is the war time, sorry, now coming to the peace time distinguished medal. So these are Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal and Vishisht Seva Medal, and many a time these are known as the PVSM, AVSM, VSM. And remember one thing, these are all 3 categories are also equivalent to the wartime, peacetime gallantry awards respectively. Now here we will be discussing all awards and distinguished medal together so that there will be more clarity. जैसा कि हमने सिविलियन अवार्ड्स को 2 कैटेगरी में यहाँ पे दिखाया है, भारत रत्न, पद्म अवार्ड, वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड यानी कि पेट्रियोटिक अवार्ड को हमने 2 भागों में कवर किया है। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी को अगर हम देखें सिविलियन अवार्ड में, तो भारत रत्न को हम छोड़ देंगे क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट ऑनर किसी भी तरीके से। तो पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, देन सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, देन परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एक इक्विवेलेंट है। सिमिलरली
पद्म भूषण, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, देन उत्तम युद्ध सेवा मेडल, देन अति विशिष्ट सेवा मेडल। ये 6 के 6 5 हैं, ये 8 कैटेगरीज के हैं जो कि इक्विवेलेंट्स हैं। एंड अगेन सिमिलरली पद्मश्री, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल, ये 5 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। नाउ कमिंग टू दी मंथली सैलरी ऑफ सम सर्टेन गैलेंट्री अवार्ड्स। सो इसको 4 बार अलग अलग ईयर्स में रिवाइज किया गया है, जो कि सबसे पहले 1999 में, देन 2008 में, देन 2011 में और रिसेंटली नवंबर 2017 में इसको रिवाइज किया गया है। अभी लेटेस्ट में जो सबसे राइट साइड में आपको दिख रहा है ये रेट है। तो परमवीर चक्र 20,000, अशोक चक्र 12,000, महावीर चक्र 10,000, कीर्ति चक्र 9,000, वीर चक्र 7,000 एंड शौर्य चक्र 6,000। मीन्स द अवार्डीज आर गिवन monthly salary of the mentioned rupee every month they are given. Once again with the memory technique, जो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये 20,000, 10,000 और 7,000 है, और जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इनके जो मंथली सैलरी है 12,000, 9,000 और 6,000 है, और वहीं सेना मेडल का 2,000 है, और उनको बाकी दोनों कैटेगरीज का भी 2-2 है, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल का। सो दीज आर ऑल अबाउट द इंडियाज ऑनर सिस्टम। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक करना, वरना मुझे डिसलाइक भी पसंद है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने आप लोगों के लिए मेहनत किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक बहुत बड़े स्तर पर कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा और कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। हमने इसमें बहुत मेहनत किया है, प्रयास किया आप लोगों के लिए। एक मेरे परम मित्र है, उनके कहने पर हमने ये वीडियो बनाया है कि